Hello. दो बार नहीं तो अटेंडेंस को लगा ही सकती है, वो तो उसमें दिखाना है ना जिसमें Ma'am, hello, ma'am. Hello. Hello. Hi. Is that okay? Yes, ma'am. Better? But ma'am, background is black still. Okay, Okay, then. What should I do? I'm not able to understand that. Okay. Wait.
आप बताइए क्या करना चाहिए? First, ma'am, I'm going to start now. ठीक है. Okay, a very good afternoon to all of you. I, Dr. Priyanka Kriplani, welcome you all to Guru Gobind Singh College of Pharmacy for this one-day workshop on intellectual property rights, which is held by the IPR cell of the college. For this, I would like to welcome Ms. Surbi Sharma, who is founder and managing partner in Tengia Advisors LLP, Bengaluru, Karnataka. Her techno-legal skills and competencies include advising and providing direction on IPR-related matters, forming growth strategy for business, strategizing the creation and management of IP portfolio, advising organizations discover and realize the true value of the IP as the partners in their growth story, deliver and address value-added and practically feasible advice on patents and trademark challenges and issues faced by the industry and academia or any other organization. She is fine motivator and speaker and lots more to say about her. So I would request ma'am to please take over and address the audience. Please, ma'am. Thank you so much for a beautiful introduction. And it was very nice visiting with you after so many years. So thank you so much, Dr. Priyanka, ma'am. Okay, then let's start with. So today's good afternoon, everyone. I hope that all of you are keeping well, very happy. And so today's topic, I would say it's not about the introduction of IPR or, what is IPR or what kinds of IPR. I think you are well aware as I see the growth of your college day by day. So I understand that all of you and hope that all of you know about it. So today we will learn that why exactly we need IPR, and when we have the protection, then how we can draw out the economic value as well as the commercial output from this kind of IPR. So let's begin with a very simple example that we day in our life or we have been, witnessing it since decades. I would say if you have grandparents at your home, you have parents at your home, and you must have heard that let's buy this property, you should invest in gold, you should invest here, you should buy the land, and then you should buy the flat or whatever. Or the first thing I think that our parents or the grandparents that advise us when we start earning, or maybe like since childhood, they used to put these things in us, is that how to create a property, right? So physical property, all of you know. And what we do when we buy our home, so we stay in that home. But after having one home, we again buy for the second home. There is a concept of second, third, fourth homes, land and all. But have you ever imagined that you have bought a home? Now you are staying in one home. Now you are buying another home. What you will do? You will rent out that home. So it's your tangible property that you are renting it out. Or maybe you will wait for some 10 years and so, and when its value got high, you will sell it. So what you are drawing out of it? So you are basically drawing out an economic value as well as the commercial value of your investment in your tangible property. The same happens with gold. The same happens with the people who put their money in mutual funds, or I would say shares. And there are so many things. So you create a portfolio of tangible assets, right? In order to secure your future. The same way, if you have the land, you can even create a commercialization over it, depending upon what kind of land it is. If it is agricultural land, you can do farming. The products that you are getting out of your farm, you can sell it in the market. And again, what you are getting the economic value. So here my point is the same way you can reap out the benefits from your tangible assets, like buying the property, buying the land, buying the house, flat, maybe your gold, or maybe anything which has a value. The same way you do with your IPR also. But in India, since the awareness came very late and we are still in the process of, getting the things, learning the thing. So here, I thought that why not to tell you today, or maybe share a piece of knowledge with you, that how to create economic value
and commercialization of your IPR that you have already protected. And in case if you have not protected so far, then how you can, strategize that, okay, आज मैं अगर invest करता हूँ, यानी आज अगर मैंने कोई पेटेंट फाइल किया है, तो क्या मुझे ये पेटेंट सिर्फ अपनी सीवी तक रखना है या मुझे इस पेटेंट को एक्सटेंड करना है, ताकि इससे इसका एक कॉमर्शियल आउटपुट निकले, एंड आई विल क्रिएट अ पाइपलाइन ऑफ मोनेटाइजेशन फ्रॉम इट, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे, कि एक आईपी क्रिएट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव आईपी क्रिएट करने के बाद, उसको प्रोटेक्ट करने के बाद तक खत्म नहीं होता है। द मेन एसेंस कम दैट हाउ यू क्रिएट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ योर आईपीआर। वो सिर्फ आपके सीवी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अनलिमिटेड यूज। हम जो बोलते हैं ना एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो द सेम वे कि एक्सप्लॉइटेशन आप किस तरीके से अपनी खुद की आईपीआर राइट्स को यूज करते हैं, द सेम वे यू यूज योर टेंजिबल एसेट्स। बट टेंजिबल एसेट्स, बिकॉज ये हमें आई वुड से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, तो हमें ये पता होता है, बट आईपीआर अभी भी हमारे लिए बहुत नया है। तो देखते हैं, आज हम सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम किस तरीके की इकोनॉमिक वैल्यू उससे ड्रॉ कर सकते हैं, और किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हमने अब प्रोटेक्ट करा रखी हैं उनको हम कैसे कॉमर्शलाइज करते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल दीज थिंग्स, गिविंग यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रादर देन अ थियोरेटिकल। तो कैसे लोगों ने एक सिंपल काम, आई वुड से नॉट अ काम, आई वुड से काम हम सब करते हैं, बट किस तरीके से अपनी स्किल को यूज किया मोनेटाइज करने में, और किस तरीके से एक बहुत बड़ा business banaya. And let me tell you, skill is something which doesn't want you to study कि आपको 12th करना जरूरी है, 10th करना जरूरी है। No, there are so many people who are not fortunate enough, I would say, कि जो स्कूल भी जाने का जिनको टाइम मिलता है, बट वो अपने स्किल के बेसिस पे दे अचीव देयर गोल्स, दे अचीव द सक्सेस। बट when you protect it, अगर आप प्रोटेक्शन ही नहीं लेंगे उस चीज का, तो everyone is free to use it. That's why IPR has a very important role to play. तो first आप identify करते हैं अपने skills,
Okay. Am I audible to you? Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Okay. Yes. So in order to understand the economic value of IPR, as well as that how we can actually, once it has the economic value, then only we can actually commercialize it. It is very much evident, right? So let's understand first that what is capitalism, जिसको हम पूंजीवाद भी बोलते हैं. तो capitalism होता क्या है? तो बेसिकली कैपिटलिज्म एक तरीके का एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि एक प्राइवेट ओनरशिप पर बेस्ड है. यहाँ पर कैपिटलिज्म समझना इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप आईपीआर राइट्स लेते हैं तो वो भी एक आपकी प्राइवेट ओनरशिप होती है. एंड जो प्रोडक्ट्स जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेते हैं. उन्हीं प्रोटेक्शन की वजह से आप ये कर पाते हैं दैट ओके वी आर द ओनली पीपल हु हैव दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वी आर कटिंग द competition from the market. And in case if there is competition also, then definitely the competitors, they are not making exactly the same products that we are making. So capitalism is an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit. So it can be production also, it can be goods also, and it can be services also. So if we see today the foundation of the modern global economy that we see, it is very important that we should understand the IP rights matter in the modern trade because they play a very important role. आपको पता है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका नाम है ट्रिप्स. आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में. दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्हिच सेज कि जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ट्रेड में आते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मे बी इट्स इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट अमंग द कंट्रीज, देन उसके ऊपर जो आईपीआर राइट्स होते हैं उनको किस तरीके से डील किया जाता है. तो दैट इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम दिस trips only. So you see that pricing in a capitalist economy, how it is. So it is very like the markets are free and efficient. The goods and the services can move from one place to the another. Goods, the IPR property rights over these goods, right? On that, the pricing makes a very important role, and it is mainly determined by the competition in the market. So supply and demand. तो supply करने वाले भी यही लोग हैं, demand create भी यही लोग करते हैं. Competition enters once anyone makes an outsized return. So that will actually attract the other competitors. Okay, we can make a good business in this. Okay, and eventually it diminish all the returns, eventually diminish all the players. इस तरीके की इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल है फार्मा जेनेरिक इंडस्ट्री. जब इनोवेटर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो ऑल द जेनेरिक इंडस्ट्रीज दे गॉट अटेंशन टुवर्ड्स इट कि हमें अब ये प्रोडक्ट बनाना है, but they do not make it. Why they cannot make the product? Because उस प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 5 to 6 पेटेंट्स रहते हैं. तो there is always a IPR protection, the patent protection. जो आपका ड्रग कंपाउंड पर से होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट, कंपाउंड पेटेंट होते हैं. देन द कॉम्पोजिशन ऑफ पेटेंट इज प्रोटेक्टेड बाय, कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इज प्रोटेक्टेड बाय अनदर पेटेंट. देन उसका जो इंडिकेशन होता है तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडिकेशन पेटेंट. एंड इफ इट इज बेस्ड ऑन सम प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी तो वो भी पेटेंटेड होती है. इसके अलावा देयर इज अनदर काइंड ऑफ आईपी राइट जो उसके ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करता है, राइट? सो that's why you cannot launch the same product because there is patent protection under the same name because there is a brand protection. But once the patent expiry happens, after that you can launch the same product but under the different brand that you create. So I would say pharmaceutical generic industry एक बहुत अच्छा example है to understand the प्राइसिंग इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. एंड यू नो कि कितना प्राइसिंग में डिफरेंस रहता है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो वंस वॉरेन बफेट ही सेड दैट अ गुड बिजनेस इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग कैसल with a deep moat around it. I want sharks and moat, I want it untouchable. So basically they are actually telling you the concept of IPR की एक strong business वो होता है कि जिसके चारों तरफ एक बहुत अच्छा moat होता है. So this is basically moat. This you must have seen. अगर आप कोई पैलेसेस वगैरह
और घूमने गए होंगे तो आप देखेंगे कि पैलेसेस इसी तरीके से बनाए जाते थे। वाई? बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस, कि अगर कोई ओपोनेंट आता है तो ये सब चीजें उनको प्रोटेक्ट करती है। तो एग्जैक्टली जिस तरीके से यू प्रोटेक्ट योर कासल, और वी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कासल, द सेम वे you protect your business like this. But you know that business is something that once you are in market, everything is open to the public, everything is known to public, and among that public you have your competitors. So those competitors will try to copy your idea. So here lies the fact that why IPR is needed, because intellectual property rights ही आपकी business को protect करते हैं by creating a different IP portfolio. It is exactly the same that when we invest our money, we create a portfolio of tangible assets. So intangible assets में भी हम एक portfolio, जिसको बोलते हैं IP portfolio, हम create करते हैं कि first of all let's protect the technicalities of the business, वो हम patent से करते हैं। देन उसके बाद हम बिजनेस का कुछ अगर नाम देते हैं या प्रोडक्ट को कोई नाम देते हैं तो हम उसको ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमारे बिजनेस में सम कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई लिटरेरी वर्क है, या मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या वेबसाइट कंटेंट है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं कॉपीराइट से। मान लीजिए वी हैव अ प्रोडक्ट और मे बी द सर्विसेज, बट हम जिस तरीके से उस प्रोडक्ट को और सर्विसेज को सेंड करते हैं अपने कस्टमर को, उस पैकेजिंग को हम इंडस्ट्रियल डिजाइन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो, मान लीजिए कोई एफएमसीजी मार्केट का एक प्रोडक्ट है, तो मियरली अ चिप्स, आई वुड से एक चिप्स है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, आई वुड कोट लाइक टू कोट द एग्जांपल ऑफ लेज चिप्स। सो यू नो कि लेज चिप्स में लेज नाम प्रोटेक्टेड है विद द ट्रेडमार्क। उसकी रेसिपी कैसी है, लाइक द सीजनिंग एंड ऑल, हाउ दे प्रिपेयर इट, इट इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पेटेंट एज वेल एज द ट्रेड सीक्रेट। बट आपको ये it would be surprising for those who do not know कि जो लेस का जो पोटैटो होता है, जिससे वो चिप्स बनता है, that potato is also protected by the plant variety protection, which is another kind of IP. So imagine अगर लेस इस तरीके का मोट नहीं बनाता तो उनकी पैकेजिंग कॉपी हो सकती है। आप जानते हैं वो 4 अलग अलग कलर्स में आता है। द पैकेजिंग इज अवेलेबल इन 4 colors. It's a red, green, yellow and blue. No one can copy that. No one copy the name Lays. And why people like to copy करने का मतलब है रेप्यूटेशन एंड गुडविल। यानी कि आप उनसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेंगे वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की आएगी। ऐसे में अगर आप उसी चीज को कॉपी करके मार्केट में पेनिट्रेट कर देते हैं, so it is very easy for you to take out and to earn a lot of business based on the reputation and goodwill of the other person who has actually. So whenever you are doing a lot of work, lot of research, or maybe you are using your creative mind to even create a, a very creative name, आप चाहेंगे कि कॉपी ना कर ले और मार्केट में उतर जाए। So you always want to reap the benefits of what you have put your effort. That's why IP is important, and IP is the strongest moat for any company, for any educational institute, and for any person like me and you, for their sustainable competitive advantage. So here also the sustainable word, I am sure कि आप सबको ये sustainable word आप हर दिन सुनते होंगे। तो that is very important, that you need to sustain for years and years to make sure that you are growing as well as your business is growing. Okay. So like if you see, there are various types of modes. Under various types of modes, we will focus on intangible assets. Okay, so there are various type of modes, but we will focus today on intangible assets. Now, if you see, there are types of economic modes or the competitive advantages. You know that there are low-cost producer like Walmart, DMart, Maruti Suzuki. So their modes is of different kind. That they keep the pricing, they play on the pricing, and it's very difficult for the small players to bring their pricing to these people. It's very difficult. Like high switching cost. So like high switching, you know that Apple,
and Microsoft. So they are like, I would say, the premium segment, but definitely they have also protected all their things. That's why they always afford to keep their cost high. The network effect. So you know that network, under the network, Facebook, Instagram, X, Uber, Amazon, all these they are based on their, this moat is their network effects. Then intangible assets. So these are the companies that are based on the intangible assets. You must know this fact that pharma industry is one of the biggest industry which is totally based on the intangible assets. Totally. And that's why I think in our curriculum, be it B Farm or M Farm, we were taught, both the things, the generic as well as the innovator. At the one part, if we have the research and development activities, we were also taught the patent. So that means they equivalence both the things in the syllabus also. And they try to, with all the 8 subjects starting from, they try to give us a I would say an overall idea of how you can become or develop the skills of an innovator, right? कि अगर आपकी खुद की अगर manufacturing unit हो तो आपको ये सब आना चाहिए. So from that, now you have the government regulations, which is this customer data based on Google and like Facebook. So these are the different types of modes which have got their own competitive advantages. But among them also, all these are although placed on different skill set, but still all are protected with the intellectual property rights. So I would say IP and moat. So moat is nothing but just a protection. आप जिसको कवच बोल सकते हैं, वो है आपके business का. So intangible asset is one of the easiest and simplest way of building or sustaining the competitive advantage and reducing competition or supply. Okay. But it is not the only and sole competitive advantage. You have to make sure that the other things are also going parallel. Okay. So now IP strategy. So this is like something that it is the same that when you invest in your tangible assets, the same way you have to think for your intellectual property point of view also, that whether we should file the IP or not, when to file the IP, where to file the IP, which IP is to be protected, and after getting the protection, how I will commercialize my IP to make sure that it is not just the name and the recognition it is giving me, but I am also able to reap the benefits in the terms of money. Means you can monetize your IP. That is very important. So let's see a few examples that will show us that how the people, and I have taken the examples from all the grounds, all the backgrounds, like the people who are non-reading, how they have created the big business, the people who are entrepreneurs, who have studied a lot and then they started the business. So I have taken so many. The people who have the just skill set of hair cutting, how they have, achieved a pinnacle, I would say. Now, this question, is IP an investment or expense? Definitely, I would say it's an investment. Let's see at the end of this session what you guys feel, that whether it's an investment or expense. Okay. Okay. And when should this investment be made? So basically, I would say at the initial stage only you should make, because right now we are global and internet has played a very important role in keeping us update in seconds by seconds we get update. So I would suggest that yes, IP is the first thing that you should protect when you start your business, or in case if you don't have a business, you are an individual also, you should do that. Okay. So let's see role of IP in businesses. Let's first see the everyday examples of the role of IP across different industry and sectors. Okay. So you see the FMCG market. You know that FMCG market, as the name itself says, it is fast moving consumer goods. ऐसे goods जो कि बिल्कुल fast moving है, वो क्या होते हैं? They all are our grocery product. जो हम किराना की शॉप से पहले लेते थे वही चीज अब आप आज सुपर मार्केट्स एंड मॉल्स से लेते हैं, और नहीं तो आपको पता है कि ऑनलाइन भी इस तरीके की अब एप्स हैं, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया. तो you can order from that also, जिसमें कि वो
deliver करते हैं आपको आपके products within few minutes, right? So see, these all are a type of tactics, business techniques, tactics, but all of them are protected by IP. So you see that the brand recognition and customer loyalty is the most important, which is protected by the trademark. So you see all the names, be it Coca-Cola name, its bottle, the shape of the bottle, Hindustan Unilever Limited, its name, its logo, Nestle, Britannia, ITC. In fact, you will say the skincare. So all these are protected with the help of trademark. ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, ट्रेडमार्क यानी व्यापार चिन्ह। ऐसा कोई भी चिन्ह जो आपके व्यापार को डेजिग्नेट करता है, वो लोगो हो सकता है, वो कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो नाम हो सकता है, वो आपका सिग्नेचर हो सकता है इन केस इफ यू आर सेलिब्रिटी। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग अ बैट, यू वेंट टू बाय अ बैट, अ क्रिकेट बैट फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर किड। वहां दो बैट अवेलेबल है, one is a plain bat and another one is a bat, and I'm talking about the localist stuff, but another bat is available with the Sachin Tendulkar signature or MS Dhoni's or Virat Kohli's signature, means whosoever is the cricketer is there. So I will say that your kid will get attracted to the one if he's a big fan of that cricketer, कि नहीं मुझे ये वाला क्रिकेट वो चाहिए, बट जब आप उसकी प्राइसिंग देखेंगे तो उसमें like it would be a very big difference. So see, वो जो इकोनॉमिक वैल्यू आज आई है एंड वो जो इकोनॉमिक वैल्यू उन्होंने क्रिएट की है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो खुद कुछ बने हैं, राइट? एंड सेलिब्रिटीज भी सेलिब्रिटी तब बनते हैं जब वो एक आम इंसान से सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो they themselves have increased their economic value by working on their skills and by protecting their IPR. उसके बाद ही वो बनते हैं। तो इमेजिन कि अगर वो उस चीज को प्रोटेक्ट ही नहीं कराएंगे, then anyone can use it, and without their permission people will sell it. But once you are celebrity and you have protected all your things, you can stop others that you cannot sell the cricket bat without taking permission from me and without taking the permission of putting my signature over it. So that is what IP gives you, a protection. जैसे कि आपके लैंड जब आप खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उन सब के लिए आपको एक पेपर होता है, एक आपको टाइटल का होता है, दिस इज द एग्रीमेंट पेपर कि ये घर आपका है, ये आप ओन करते हैं। तो सेम आईपी में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड file it and protect it so that you will become the owner. Okay. So the external appearance, packaging, it is protected with the help of design. It's also kind of IP. The innovations, the new product, and the introduction new product introductions, they are protected with the help of patent. Imagine now, अब आप एक ऐसा कंसिडर कीजिए, एक दिन ऐसा सोचिए कि जिस दिन जितने भी ब्रांड्स आप पहनते हैं, जितने भी ब्रांड्स, लाइक राइट फ्रॉम योर टी टिल द लास्ट थिंग दैट यू यूज इन द नाइट, उन सब के ऊपर से मान लीजिए एक दिन ऐसा आ जाए कि सारे ब्रांड कोई इरेज कर, हर सारे ब्रांड कोई इरेज कर दे, और अब आपको कोई कहे कि जाके अब आप शॉपिंग करके आइए मार्केट में, और आपको राइस लाना है, दाल लाना है, ये लाना है, ये क्रीम लानी है, वो लाना है, आई मीन एवरीथिंग विच इज योर नेसेसिटी, राइट, वो आप लेकर आइए। यू टेल मी, हाउ विल यू मेक श्योर कि जो राइस आपने पहले खरीदा था वो सेम क्वालिटी का राइस आप आज ला रहे हैं? जो आपने मान लीजिए क्रीम पहले खरीदी थी, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे लेबल्स नहीं है उसमें, सिर्फ क्रीम की जगह क्रीम लिखा है, एंड दे ऑल आर पैक्ड इन अ सिंगल बॉटल, मतलब सब एक ही जैसे सिमिलर बॉटल में पैक्ड है, सबका कलर एक जैसा है, और मे बी देयर इज अ डिफरेंस इन कलर ऑल्सो, बट स्टिल देयर इज नो लेबल, कोई कंपनी का नाम नहीं है, बस लिखा है क्रीम। ऑयल है तो लिखा है ऑयल, राइस है तो लिखा है राइस, बिस्किट है तो लिखा है बिस्किट। ऐसे ही क्लोथ्स है, क्लोथ्स में भी कोई ब्रांड नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर वहां पर 10 कंपनीज भी ये सारे प्रोडक्ट्स को केटर करती है, हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि इस कंपनी की क्वालिटी ये है एंड मुझे ये चाहिए? बिकॉज यू ऑल्सो हैव योर हार्ड अर्न मनी, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड चेक कि ठीक है आज मैं ये ट्राई करता हूँ, कल मैं ये ट्राई करूंगी, परसों मैं ये ट्राई करूंगी, एंड देन नो, वी कैन नॉट डू दैट।
सो यू जस्ट इमेजिन कि अगर ये सब नहीं होता, ये ब्रांडिंग ही नहीं होती, ये कुछ भी नहीं होता, सब कुछ प्लेन, ये बिल्कुल वैसा ही होता अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे कि वो किराना शॉप पे जाते थे एंड वो वहां से राइस, गेहूं और ये सब लेते थे। बट आप उनसे पूछना, उनको सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता था? उनको सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता था कि जब वो नेक्स्ट टाइम जाते थे तो इस बात का वैलिडेशन या एश्योरिटी वो शॉपकीपर या ग्रोसरी स्टोर मैनेजर भी नहीं कर पाते थे कि उनको एग्जैक्टली सेम क्वालिटी मिलेगी। वाई? बिकॉज द रीजन इज कि ये सब चीजें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्री मेड है, इन सब चीजों के ऊपर एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। दे हैव अ हाईली इम्पैक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जरूरी नहीं है कि जो राइस आपको आज मिला वो कल भी मिलेगी, बट व्हेन यू पैकेज द राइस, like you know that there are so many rice company which give you the packaged rice, they make sure कि उनके पास जो राइस का है वो सेम ही लॉट या बहुत कम डिफरेंस में, आई वुड से जिसमें डिफरेंस बहुत कम हो, वो उनको मिलता है। सेम अप्लाइज टू योर जेनेरिक मेडिसिन ऑल्सो। आप मेडिसिन वही ले रहे हैं, बट क्या उसमें डिफरेंस होता है? नहीं, लेबल्स चेंज होते हैं, लेकिन मेडिसिन तो आप वही ले रहे हैं ना। इफ टैबलेट कंटेन्स पैरासिटामोल, it is by the innovator. Another tablet comes from the generic company. They are also having the same active pharmaceutical ingredient, right? Which is actually giving you the same effect. So same happens with the FMCG market also. Definitely FMCG market is not that regulated, and we do not see that kind of, efficacy that we see in the case of pharmaceutical. So imagine a world where there is no branding. It will be a big illusion of choice that what to choose. तो बेसिकली ये जो ब्रांड्स, ये आईपीआर प्रोटेक्शन, ये सिर्फ उन बिजनेसमैन को ही नहीं हेल्प करता है टू मेक hefty amount of money or make a big business, but actually ये हम कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें राइट क्वालिटी का राइट प्रोडक्ट मिलता है, that not only saves our time, that will make sure कि हमें फ्यूचर में भी सेम चीज मिलती रहे, सेम चीज। आई थिंक आप अपने घरों में भी ये देखते होंगे कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके ग्रैंड पेरेंट भी यूज करते थे, आपके पेरेंट्स भी यूज करते हैं, आप भी शायद यूज करते। तो इट्स लाइक वेरी वेरी कॉमन फ्यू थिंग्स, वेरी वेरी कॉमन, एंड उनका इतना एस्टेब्लिश ब्रांड है कि वो हमारे यहाँ पे जनरेशन से यूज हो। Now, the another thing is, if you see hospitality and restaurant, so you know that the food chain restaurants, they are the quick service, and they are based on the IP franchising model, right? They build the IP. First of all, they identify their IP, then they create the IP. After that, they protect the IP, and then they license it to franchise, and this is how they earn money. You know, MACD, आप कभी अगर विजिट करें नेक्स्ट टाइम, तो इस बार मेरी तरफ से देखने की कोशिश करिएगा, और मे बी आपने देखा होगा, बट जस्ट ट्राई टू अगेन ऑब्जर्व द थिंग्स द वे आई एम टेलिंग यू। अब आज सारी उनकी रेसिपीज जो अलग अलग आती है, मैक वेजी, मैक आलू पैटी, और देयर आर सो मेनी वेरिएशंस दे आर हैविंग। अगर आप देखेंगे, हर नाम भी प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर लिखा है TM या R, means the name is even protected, because it is possible that somebody cannot, copy their recipe because it is protected, but someone may sell Maharaja Mac by saying ये महाराजा मैक है, but they made sure कि okay, महाराजा मैक भी हम प्रोटेक्ट करवाएंगे, मैक आलू टिक्की भी हम प्रोटेक्ट कराएंगे। डेफिनेटली ये इंडिया के लिए है, that's why the आलू टिक्की and all these names are there. If they are like operating in other countries, they must be having the different name. But this is how. So when they are giving you that franchisee rights, you have to pay for all these things also. अगर आप मान लीजिए ये मैस्कट यूज कर रहे हैं अपने स्टोर के बाहर, मैकडी के बाहर, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। इसलिए आपने देखा होगा कि हर स्टोर के बाहर मैकडी दिस मैस्कट नहीं होता है। So there are so many things. आपने कितना बड़ा साइज का M लगाया है, and there are so many things. So it all depends upon the franchisee agreements that you are having. And this is how a company once created the recipe, protected all their recipe, protected the names of the recipe, protected all the copyrights and everything. And then they have actually licensed it out, and they are now earning like
since so long, and they have actually created a pipeline of money जो कभी बंद होगा ही नहीं. It's like if they are making sure that they are, अपनी क्वालिटी को अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं विद द चेंजिंग टाइम्स एंड विद द न्यू ईरा, लाइक जेन जी का भी जमाना है, तो उनके अकॉर्डिंग भी अगर वो न्यू न्यू वेरिएबल्स अपने निकालते रहते हैं, इन सब चीजें, आई थिंक दीज बिकम लाइक 100-year old and maybe more than that. So this is very important, and IP plays a very important role because IP is that mode which has protected them. Otherwise, तो ये कब का, I mean, it would have been copied. Same happens with the apps and software. You know that there is no competitor of Facebook, there is no competitor of X. So Twitter is now X. So they all are like they are all having the top level domains. They protect their domain. They protect their website look, that how the website looks, the display of their website, and all these things are protected. And you know कि ये सारे लोगोस इतने प्रोटेक्टेड है, और हम लोग इतनी बार इनको देखते हैं कि हमें अगर ये लोगो कहीं है तो वी नो एंड वी रिकॉग्नाइज कि ये ट्विटर का है, मींस ये एक्स का है, ये फेसबुक का है, ये इसका है, ये लिंक्डइन का है. सो यू सी दैट ब्रांड क्रिएट्स a lot of things, and it's not just the brand, it's like a protected brand. If it is not protected, then आपको बहुत सारे व्हाट्सएप दिखते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता कि अगर आप बिना ब्रांड के अगर किसी स्टोर में घुसो, आपको एक साथ एक जगह बहुत सारे गेहूं दिखेंगे, एक साथ एक बहुत सारी जगह राइस दिखेंगे. अब नाउ 20 टाइप्स ऑफ राइस आर देयर. हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मुझे लेना है? तो सेम कुड हैव हैपेंड अगर आईपी नहीं होता एंड अगर इस तरीके की ब्रांडिंग नहीं होती. और ब्रांडिंग है, बट अगर ब्रांड आप प्रोटेक्ट ही नहीं करा पा रहे हैं, आईपी ही नहीं है, तो उस ब्रांड का भी कोई यूज नहीं है. सो आईपी इज दैट प्रोटेक्शन, दैट मोट. Pharmaceuticals में, you know, like this is the metformin, glimepiride, and voglibose combination. You know that this combination is protected. Now the patent has expired, but this combination is protected with the help of patent. Metformin once was patented drug. Glimepiride was patented drug. Voglibose was patented drug. Now they are off patent. Now glycomet trio, that is its trademark. So it is also protected with the help of IP called as trademark. Now, if you see the packaging where my cursor is, this is protected by the industrial design. If you see the company's name, USV is also protected with the help of trademark. So like on a single product, there are so and so many IPRs are there. So automobiles is also one of the sector where everything is protected. Their logo, the color combination of tractors, cars, external experience is protected with the help of designs. The internal technologies like the engines, gears, mechanism, they can be protected by the help of patent. Then agrochemicals and agriculture. So just like the pharmaceuticals, pesticides are also marketed with the brand names. They are easier to remember than the active ingredient. Hit हम सबको याद रहता है, but hit के अंदर क्या होता है, that is very difficult for us to understand and even remember, right? इनके भी formulations, mixtures and combination, ये सब patent से protect होते हैं. Hit नाम जो है वो ट्रेडमार्क से प्रोटेक्टेड है. राउंड अप नाम जो है वो भी ट्रेडमार्क से प्रोटेक्टेड है. The actual industrial and commercial process and formulas, they are kept trade secrets. And you know that the plant variety protection we have, so which protects the seeds, which can protect the new variety of plant. As I told you in case of Lay's, that potato is protected, which has 5% less moisture than the normal potato, and its name is FC5. Now, education. Since you are right now in a college, right? So your college can also, you know, with the help of their IPR, since your college is doing very good in protecting the IPR, the next level is that you guys have to focus on that how we can commercialize the IPR, means to spread more about it and how we can earn the money from this kind of protection. So you know that all the educational institutions which are called as the branded, or which have actually acquired the branding and reputation, definitely because of their the placement of their students, like IIM, IIT, MIT, Yale, Harvard.
So they can be protected by trademarks and commercialized in the form of merchandise like the t-shirts, or it can be merchandised in any form. Like the educational material, like for example, today I'm giving the lecture right on your platform. Now, if you are like like in case I have protected this particular lecture, and if your university or college will ask me that, so we can we use this educational material for this event and all. So, what do you think that what should be as a person who has created this IP should do? So I would say yes, you can do it, but it should be there must be a price for it. So see, this is how you can also create your videos, textbooks. You can protect it with copyrights, and then you can commercialize it. But definitely, it should have a very good content. Then only people will buy it. You know that these days the YouTubers and all, they are also getting a lot of money for this. Inventions and discoveries, like the way you do in your research labs, you are filing the patent for it. So I would suggest that just do not restrict yourself by just filing the patent, but इस तरीके का इन्वेंशन कीजिए, इस तरीके का पेटेंट लीजिए कि इंडस्ट्री भी सोचे कि हमें जीजी स्कोप से टेक ट्रांसफर करना है, हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए एंड वी वांट टू कमर्शलाइज इट, बिकॉज कमर्शलाइज करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ बैकअप, विच आई थिंक एज अ यूनिवर्सिटी इंडिया में बहुत मुश्किल होता है. बट एटलीस्ट हम एक छोटे स्केल पर अपने लैब में जो हमें मिली है, वहां पर हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं ना कि उसको कोई बड़ा प्लेयर, अ बिग प्लेयर इज रेडी टू टेक, ओके आई विल टेक इट. सेम वे स्टूडेंट्स को भी लिया जाता है. आप में से जो बहुत अच्छा वर्क करेंगे, एफर्ट डालेंगे, कंपनीज आपको पिक करेंगी. तो वो क्या है, वो आपकी भी तो एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. बट वी डू नॉट यूज दीज वर्ड्स, बिकॉज still we are under that transition phase. But the day is not so far. I'm very hopeful about it. Then finance and insurance. So all these are marks are protected. Imagine a bank scenario where there is no name of HDFC, ICICI, only banks. Now it is very difficult that our hard-earned money, which bank we should put. So this is how they actually create a lot of not only the IPR, not only they actually create a goodwill or the reputation, they are actually good for both. For the companies who are making it or taking it, and the consumers like us who are using it. We also get sure and assurance that we are getting the quality products as well as the services. And they are also getting the benefit of what they have invested. That's why IP is an investment. So clothing and footwear, okay, that is also one of the industry where IP plays a very important role. And you know that all of you get inspired with the brand only. Because hardly any one of us, what I feel, is capable enough to judge the quality with the naked eye, right? We cannot judge the quality of a shoe. We cannot even judge the quality of a medicine that we are taking, right? So it is all the branding that is and that impacted our minds. Luxury goods. So these all are the watches, and you know it very well, right? Individuals. So individuals may this name Javed Habib. I salute this person for a reason that with the skill of a haircut, if someone can achieve this kind of pinnacle, I think you guys and we are in the research oriented things, we can achieve much, much more and many more. So, and with this example, I also would like to press a point here कि and identify also कि कोई भी काम छोटा नहीं होता. It all depends कि आपको कहाँ तक अचीव करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप एक टाइम देखिए, जैसे मुझे नहीं पता बट मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है आसपास, इट वाज अ लॉन्ग बैक, कि लाइक इस तरीके का काम को बहुत छोटा माना जाता है. बट टुडे इफ यू सी, बिकॉज ही बिकेम द ब्रांड इन दिस नेम, ही इज नॉट कंसिडर्ड एज अ छोटा काम. तो वही है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता. आप में स्किल आना चाहिए, हुनर तो आप में होना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंटली आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस हुनर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं एंड आप कितना अचीव करते हैं. एक छोटी सी चीज भी आपको एक ब्रांड और एक सेलिब्रिटी बना सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. जस्ट इमेजिन एक क्रिकेटर्स, इमेजिन
अ पर्सन हु इज प्लेइंग द क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के पैसे ले रहा है, मतलब जस्ट इमेजिन ही हैज बिकम द सेलिब्रिटी जस्ट प्लेइंग द क्रिकेट। बट ऐसे तो बहुत लोग खेलते हैं, बट सेलिब्रिटी तो हर इंसान नहीं है। दैट मीन्स यू हैव अ सर्टेन स्किल सेट, एट द सेम टाइम यू आर मेकिंग श्योर कि आप उसको आईपीआर से प्रोटेक्ट करा रहे हो। तो आईपीआर से जब आप प्रोटेक्ट कराते हो तो आपको एक चांस मिलता है उसको कॉमर्शलाइज करवाने का। लेकिन अगर आपने वो प्रोटेक्ट ही नहीं करवाया, देन आप सबको चांस दे रहे हो कि वो आपका अनप्रोटेक्टेड वर्क या आपकी गुडविल को यूज कर पाए। तो दैट्स व्हाई नॉट ऑल द क्रिकेटर्स आर कंसिडर्ड एज सेलिब्रिटीज, ओनली फ्यू। उसके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका स्किल सेट तो होना चाहिए, आप में एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक आज हमने मेहनत की हम कल नहीं करेंगे, तो इट शुड बी कंसिस्टेंट एफर्ट। एट द सेम टाइम यू शुड बी अवेयर अबाउट द राइट्स, right? So it's not that the tangible property they have, I think their worth is more on the intangible property rather than a tangible property. आप अगर कभी इसके बारे में देखें, बॉलीवुड में ऑल द सेलिब्रिटीज वो खुद एक सेलिब्रिटी है, और एक सेलिब्रिटी ही एक दूसरे ब्रांड को इंडोर्स करता है। तो लाइक इफ देयर इज अ वॉच और देयर इज अ ज्वेलरी और देयर इज अ बैंक, इट इज बैंक इटसेल्फ इज अ ब्रांड, बट इट इज ऑल्सो endorsed बाय अ सेलिब्रिटी। मीन्स उनके जो एम्बेसडर होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, वो खुद एक सेलिब्रिटी है। तो इमेजिन अ सेलिब्रिटी इज a brand ambassador of a biggest brand, which and that brand is bigger than that celebrity. Still a celebrity is branding it. So you see, but for that you need to become a celebrity, right? People today, they are like with a skill set of standing comedy, they are achieving like anything. I wonder that. But imagine if they have not protected their name, if they have not developed that skill, and if they have not identified कि हाँ यार इसमें प्रोटेक्शन हो सकता है, वो उसको कॉमर्शलाइज भी नहीं कर सकते। तो कॉमर्शलाइजेशन तभी इफेक्टिवली पॉसिबल है जब आप प्रोटेक्ट करें, चाहे आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, यानी कि आपका घर, आपका व्हीकल, आपका लैंड। उसमें भी अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है आपके पास, एनीवन कैन यूज इट, राइट? एनीवन कैन ट्रेसपास इट, कुछ भी इलीगल कुछ खड़ा कर सकते हैं। तो यू नीड टू हैव द लीगल पेपर्स फॉर इट। सेम हैपेंस विद द intangible or intellectual property rights also. Even the small and local business, you know that the post-COVID era, we have seen so many small businesses developing. Now let's see the success story that when David becomes Goliath and he Goliath using the IP. So you know that the Microsoft's copyright demands, I would suggest all the software developers should say thanks to Bill Gates, because जब उन्होंने इसको डेवलप किया था अपना बेसिक सॉफ्टवेयर फॉर द Altair 880 कंप्यूटर, एट दैट टाइम तब कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता था कि सॉफ्टवेयर को जो प्रोटेक्ट करे। एंड उसी की वजह से पायरेसी होती थी सॉफ्टवेयर की, यानी कॉपिंग होती थी। एंड हियर दिस ग्रेट मैन बिल गेट्स, ही टुक दिस इनिशिएटिव। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है 1976, जो लेटर की कॉपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, इफ यू सी, कि इस तरीके का जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी पायरेसी ना हो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? एंड वी वांट कि सॉफ्टवेयर वर्क को कॉपीराइट लॉ से प्रोटेक्ट किया जाए, बिकॉज यू नो दैट कॉपीराइट जो है, इट प्रोटेक्ट्स द आर्टिस्टिक एज वेल एज द लिटरेरी वर्क। Okay, here I would like to give one example. ये actually मुझे कल ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो I would like to share. किसी ने मुझसे पूछा कि there are old songs, there are old movies, and the people used to sing, right? Old songs, old movies, and वो YouTube पे डालते हैं, but उनको कोई copyright infringement नहीं होता है। तो सी कॉपीराइट जो होता है वो क्या प्रोटेक्ट करता है, सबसे पहले आपको वो समझना इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, not the idea, and it should be fixed in the medium. तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए हम सब पिकनिक करने गए, आप सब, हम सब कहीं पिकनिक पे जाते हैं। पिकनिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक सी बीच है, ओके? एंड आप में से कुछ लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं अपने कैमरा से, कुछ लोग अपने फोन से फोटोग्राफ ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि बीच को देख के उनको शायरी याद आ रही है तो उन्होंने शायरी लिख दी,
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोयम लिख दी, कुछ लोगों ने गाना लिख दिया एंड कुछ लोगों ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि जो गाना जैसे कि दिमाग में है, तो आइडिया हो गया, आइडिया तो सबके सामने सेम ही है, बट कुछ उसको किसी और फॉर्म में बना रहे हैं। तो फर्स्ट है इंपॉर्टेंट ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आपने अपनी ओरिजिनल वे में उसको एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ photograph, you get copyright for it, in the form of painting, and you know that two paintings cannot be similar. Why? Because उसमें आपका एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन आता है, बिकॉज दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए दो लोगों के द्वारा की हुई चीजें भी एक जैसी नहीं हो सकती, राइट? तो जब आप ये बना रहे हैं अलग अलग, इन सब का फिक्सेशन ऑफ मीडियम भी जरूरी है। तो कोई ये नहीं बोल सकता अरे ये मेरे दिमाग में था तुमने कॉपी कर लिया, नहीं, क्या आपने उसको फिक्स किया? फिक्स कैसे होता है? जब दिमाग से निकल के वो आपके किसी फॉर्म में आए। तो वो पोएट्री हो सकती है, आपने लिखा, लिरिक्स हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकता है, शायरी हो सकती है, ये सब होते हैं, या एक गाना आपने सिंगिंग कर दी, सो दैट्स कॉल्ड द कॉपीराइट। सो पीपल गेट कंफ्यूज कि ऐसे कैसे हो जाता है। तो इट्स नॉट द आइडिया। मान लीजिए कोई किशोर कुमार जी का कोई गाना है, तो आइडिया तो हो गया, वो लिरिक्स हो गया, बट आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने उनको गाया, आप वो सिंगर ही नहीं है, तो फर्स्ट तो ये हो गया ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन कि आपने गाया उसको, दिस इज वन ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म। एंड देन द वे द कैसे गाया। तो and third, fixation in a medium. It should be fixed in a medium. This is how copyright gives rights to all, provided it should be original and fixed in a medium. The second thing is the Google's page rank patent. तो अगर आप देखेंगे तो इसमें, if you know, this is very important thing आज के world में, Google page rank, but it is also protected by the founders. So this particular formula कि कैसे पेज रैंकिंग आएगी, बिकॉज इसके पीछे भी कोड लिखा हुआ है उन्होंने पूरा, दैट इज ऑल्सो विच इज नेम्ड एज पेज रैंक। तो दिस पेज रैंक इज इवन प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडमार्क, एंड जो इन्होंने पूरा उसके पीछे किया है, द रिसर्च दैट दे हैव डन, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ IPR। अदरवाइज कोई और भी आ सकता था इस तरीके का लेके कि हम भी पेज रैंकिंग करते हैं, बट सो फार देयर इज नो। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ मोनोपोल। Javed Habib's franchisee, I told you that he is the hairstylist and businessman from India. Imagine a hairstylist making a business and opening, I think, more than 150 branches, what I know. No, not more than 150, more than 115 cities को उन्होंने ऑपरेट किया है, कितने उनके सलोन्स हैं। एंड इमेजिन उन्होंने सिर्फ सलोन तक नहीं रखा है, उन्होंने हेयर स्टाइलिंग में भी एकेडमिक्स को डाला। मींस इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम अ प्रोफेशनल यू शुड जॉइन देयर एकेडमी। दिस इज कॉल्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ IPR। जो आपने सीखा है आप उसको किस किस तरीके से कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं उसको, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको प्रोटेक्ट कराएं। अगर मान लीजिए उन्होंने अपना ये नाम, दिस नेम इज नॉट प्रोटेक्टेड, दिस लोगो इज नॉट प्रोटेक्टेड, देन आपके और मेरे लिए भी पॉसिबल है कि कॉपी करो, ओपन करो, किसको पता है कि जावेद हबीब का है या नहीं। द रीजन इज कि इन सारे सलोन्स में वो कहीं भी नहीं रहते, ही हैज जस्ट लाइसेंस इट आउट। तो बट वो पॉसिबल क्यों नहीं है कॉपी? द रीजन इज इट इज प्रोटेक्टेड। सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर IPR, देन प्रोटेक्ट इट, क्रिएट करिए, फिर प्रोटेक्ट कीजिए, एंड प्रोटेक्ट करने के बाद उसको कॉमर्शलाइजेशन 200% करना चाहिए। तो जब आप कॉमर्शलाइजेशन IPR को करेंगे, एंड व्हेन यू बिकम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको रियलाइज होगा कि एक टेंजिबल प्रॉपर्टी के पीछे हम जो इतना ज्यादा वो करते हैं कि लोन लेते हैं फिर ये करते हैं, विच इज ऑल्सो गुड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट हमारे में ये अप्रोच अभी भी लैक करता है कि हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्रिएट करने में ही खुद को पुश नहीं करते, जबकि उसमें ये एक दिमाग का ज्यादा वो है। आई वुड से इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड एंड योर थॉट, एंड टू ब्रिंग देम टू अलाइव, प्रोटेक्ट इट एंड देन कॉमर्शलाइज इट। सो दिस creates a lot of money for you rather than your tangible asset. इसलिए अपनी जिंदगी में एक चीज जरूर कीजिए, एक IP जरूर क्रिएट कीजिए,
एंड उसको डेफिनेटली कॉमर्शलाइज कीजिए, एंड वो आईपी ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किल पर बेस्ड हो, बिकॉज आपकी अपनी स्किल ही आपका वो ओरिजिनल फॉर्म होता है जिससे वो आपको दूसरों से अलग करता है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ वे ऑफ टीचिंग ऑल्सो, राइट, इट कैन बी अ वे ऑफ राइटिंग द नोट्स ऑल्सो. उन्हीं नोट्स को आप एक बुक में प्रेजेंट कर सकते हैं. It becomes a IP. You know that person who is a writer, right? And now his based on his writing and novels, people are making movies. So imagine उसका सिर्फ बुक्स तक ही उन्होंने खुद को नहीं रखा. He wrote the stories of this kind कि डायरेक्टर्स को मन होता है कि चलो हम इस पे मूवी बनाएं. Why? Because directors can also see a lot of commercialization कि इस मूवी, इस स्टोरी पर हमें बहुत अच्छा मिल सकता है. तो दे ऑल्सो मेक, सो दैट्स वाई. So this is the last part of this presentation where we will see कि इंडिया में किस तरीके से एक नॉन रीडिंग विमेन ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जिसको हम बोलते हैं लिज्जत पापड़. ये मेरे बचपन का है, एज आई नो, बट आपने ये देखा होगा और इसके बारे में सुना भी होगा. एंड आपको ग्लैड होगा ये जानकर कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन सक्सेस स्टोरी में लिज्जत पापड़ इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज को भी एक एक रिकॉग्निशन मिला है जो हम सबके लिए बहुत अच्छी है. एंड आई थिंक हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है. तो लेट्स सी इन अ वेरी नटशेल कि ये क्या है. तो अबाउट द लिज्जत पापड़, तो लेट मी टेल यू, लिज्जत इज अ ब्रांड एंड पापड़ आई थिंक आप सबको पता होगा. एंड आपके घरों में भी आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लाइक अचार, पापड़, पापड़ी. देयर आर सो मेनी, सेव, अदर नेम. बट इमेजिन कि किसी ने घर में पापड़ बनाने वाली लेडीज ने किस तरीके से बिजनेस को इतना बड़ा बनाया. मीन्स इट्स हैज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन too. So first, there was a cooperative established by the Indian women. They actually, 1 minute, yeah. So actually, starting यहाँ से हुई थी कि 7 non-reading women, they used to make the papads, okay, and they used to sell it. तो वो शायद दिन के 4 पैकेट बनाते थे, और ये मुंबई की ही एक जगह से आए थे, और ये पापड़ बना के बेचते थे. जब उन्होंने पापड़ बेचा तो लोगों को उनकी चीज अच्छी लगी. दैट्स व्हाई आई सेड कि आपकी कोई भी स्किल सेट में, चाहे सर्विस हो या गुड्स हो, सर्विस यानी कि मैं अभी आपको एक लेक्चर दे रही हूँ, ये एक सर्विस पार्ट हो गया. आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप किसी को हेयर कट कर रहे हो, सर्विस पार्ट है. गुड्स यानी जब आप अपना प्रोडक्ट आप देते हो, उसमें आप कोशिश कीजिए अपना द बेस्ट दीजिए, एंड उसमें कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में मत कीजिए. तो सेम दे ऑल्सो डिड कि वो नॉन रीडिंग जो 7 विमेन थी वो पापड़ बनाती थे घर में, एंड देन वो उसको बेचते थे. हर दिन इस तरीके से वो करते थे 4 पैकेट्स, एंड उधर ही लोकेलिटी में बेचते थे. उनके पापड़ लोगों को इतने पसंद आने लगे कि उसकी डिमांड, जब उसकी डिमांड हुई तो उन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी नंबर ऑफ पीपल और बढ़ाए. पहले वो 7 थे, 7 से वो और बढ़ गए, एंड देन उन्होंने और बनाना शुरू किया. जब उन्होंने और बनाना शुरू किया, एट द सेम टाइम दे आर गेटिंग अवेयर ऑल्सो, आई वुड से उनको राइट गाइडेंस भी मिली. उनको किसी ने बोला कि आप एक इस्टेब्लिशमेंट बनाइए जिसका नाम कॉपरेटिव, एक कॉपरेटिव बनाइए, उसका नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया. एंड इसमें फीमेल वर्कर्स को काम दिया गया. उन्होंने अपनी हर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्ट्रीमलाइन किया, और ये सब धीरे धीरे हुआ. बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया, अलग अलग नाम से ट्रेडमार्क कराया. अब पापड़ बनाना तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, बिकॉज ये तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हर लेडी को आती है घर में, राइट, और वो देखते हैं बनाते हुए अपनी मम्मी को. लाइक आप लोग अपनी मदर्स को बनाते हुए या फादर्स को बनाते हुए देखते हो बहुत सारी चीज, तो आप सीखने की जरूरत नहीं होती, इट्स अ डेली थिंग कि आपको दिखता है. तो इसमें ऐसा क्या था जो वो प्रोटेक्ट करा सकते थे? तो उन्होंने नाम, सबसे पहले लिज्जत नाम को प्रोटेक्ट कराया. जो उन्होंने एक कॉपरेटिव बनाई, उसका नाम उन्होंने प्रोटेक्ट कराया. उसका एक लोगो था, देयर मैस्केट. आप इमेजिन कीजिए, आई वाज लाइक अ किड एट दैट टाइम दूरदर्शन पे DD1 पे उसका एक एड आता था, तरम कुरम करके एक कुछ एड आता था, एंड रैबिट वाज देयर मैस्कट. तो सी मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको एक मैकडोनल्ड्स का भी एग्जांपल दिया, राइट. वी अप्रिशिएट कि फॉरेन कंपनीज कितना कुछ अच्छा करती है, बट वी शुड नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये चीज आज से
30 years 35 years पहले इंडिया में भी थी, तब भी किसी ने इस पे फोकस किया कि इसको ट्रेडमार्क करवाएं। एंड इम्पोर्टेंटली इन लेडीज ने भी उस चीज को फॉलो किया, जिसने भी उनको गाइड किया दे फॉलोड इट। एंड एट दैट टाइम देयर वाज कमर्शियल, एंड दैट कमर्शियल वाज एटलीस्ट हम बच्चों के बीच में इट वाज लाइक वेरी मच फेमस, एंड गिव्स अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग। एंड इम्पोर्टेंटली आज भी लिज्जत पापड़ है, एंड दे कम विद अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आल्सो, बट इम्पोर्टेंटली दे हैव प्रोटेक्टेड everything. So today, if you see, they have so many members, many branches, they have protected many things. So here is the history. It is created in 1959 with the rupees 80 as an initial capital. Now you see the amount with what they have started. So the one who say कि बहुत बड़ा business लगाने की जरूरत है, we need a proper setup. Yes, setup is necessary because it makes your work very quick, streamline और सब वो करता है. But not everyone can, afford it. So they have started in 1959 with rupees 80 initial capital. यानी raw material of making पापड़, जिसमें दाल लगती है आपका, कुछ मसाले लगते होंगे, ऑयल लगता होगा, and एक कुछ रोलिंग करने के लिए बेलन जिसको हम बोलते हैं वो लगता होगा. तो so many things. By 7 non-reading but skilled women neighbors, I would like to say कि ये जरूरी नहीं है that you have read. Skill is something which can be learned, right? या तो आप में होती है, लेकिन होने के बावजूद भी निकालना आपको पड़ता है. You need to express that. That's why copyright concept is there. कि expression कीजिए, अपने expression दीजिए. आप expression देंगे तो ही वो protected है. So see, your IPR also talks about the creativity. They also want you that please take out your creativity out of yourself and protect it. So ये लोग पापड़ based dishes बनाते थे in South Mumbai. Initial success based on production and sale of papad. They decided to make and sell the papads for a local merchant, right? Then initial output was 4 packets of papad. Then उन्होंने capacity increase की, अपने members को 25 members बनाया in 3 months. Look at their growth. They purchase more manufacturing and storage equipment. Definitely पहले वो अपने ही घर में utensils से बनाते होंगे, उसके बाद उन्होंने proper use किया. They improve the production process, speedier, high quality papads, improve logistic facilities, implemented quality system. Then they have built an organization. तो हम जब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सी उसमें ये प्रिंसिपल्स उन्होंने डाले दैट देयर मस्ट बी म्यूचुअल अफेक्शन एंड कंसर्न, डिवोशन, कलेक्टिव ओनरशिप, सर्वोदय, राइट? तो दीज आर द पिलर्स एंड दे वर रेफर्ड टू एज सिस्टर्स. She is one of the surviving founders who was the part of among that 7 women, right? And first branch उन्होंने outside Maharashtra खोला 1968 में. So you see the time 1959 से 1968, and these are non-reading women, but they have a skill called papad banana. They registered formally and legal as society, and then they have taken loans. They made a committee. अब उनका ये 2013 का फिगर है that 650 करोड़ के ऊपर उनका टर्नओवर था. उसके बाद then they have divided their labor as a processing unit, packaging unit, distribution unit. See, with this story, एक ही चीज हम सिग्निफाई कर रहे हैं कि you can do anything that you want in life. But important is that you should know कि क्या मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो एक बिजनेस के चारों तरफ मोट बनाना बहुत जरूरी है, एक कवच बनाना बहुत जरूरी है. एंड दे हैव डन द सेम डिस्पाइट बीइंग नॉन रीडिंग. आप सोचिए उनको जब पढ़ वो नहीं सकते, वो सिर्फ समझ सकते हैं, बट तो भी उन्होंने उस टाइम, आज से 35 इयर्स पहले भी अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर कोई उनको कह रहा है कि आईपीआर करवाना है, तो उन्होंने ये सब चीजों में उन्होंने आगे, डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम person who is going to take the decision on their behalf. But see, their skill set has bring today the Lijjat Papad, and today this story is on white book, right? So this is how now today, so they are having so many things. I would say they have started making agarbatti also, soaps also, so many things. Their slogan is also protected by IPR. Sasa is a symbol for women's power. This is the one. So yeah, when I was a kid, this was the commercial ad that used to come on DD1.
that I have myself has seen. So at that time also they have thought about the mascot. So it's not about just the MACD जिन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल किया, they were from the developed countries. आप सोचिए इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जहां पर ट्रिप्स एग्रीमेंट 1 जनवरी 2005 में एनफोर्स्ड हुआ, हमने 1995 में साइन किया और 10 साल बाद एनफोर्स हुआ, मतलब वो लीगली हमने इम्प्लीमेंट किए अपने लॉज सारे। तो आप सोचिए अगर हम देखें तो हम भी बहुत we were also there only. The only thing is lack of evidence. So if you see at that time also, this all were protected. If you see their logo is here, legit name Papad is there. If you see the tagline is there, Karram Kurram, Kuram Karam. This bunny is there, right? This bunny is there, which is their mascot. So all this they have also done. They have done the TV campaign and all. They have more than 70 registered trademarks like Lijat Papad, Lijat Atta, Lijat Fish Masala, many international trademarks. So all these are things. So this is all about today's topic. Do we have 10 minutes more? Can we take 10 minutes more? Ma'am, can we take 10 minutes more? Yes, ma'am. Can we take 10 minutes more? 5 minutes, ma'am. Or it's 5 minutes more? Okay. Yes, ma'am. So here I would like to. No issue, ma'am. Dr. Subbi, Yeah. you can take 10 minutes, ma'am. No issue. No, I'll take. Sorry. You can take 10 minutes, no issue. Okay, thank you so much. Okay, so today, this was all about the commercialization of IPR, right? अब हम ये एग्जांपल्स देखते हैं कि इन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर की वजह से क्या क्या केसेस भी होते हैं। तो देयर आर सो मेनी केसेस, राइट, कि किस तरीके से आपने अगर रियली ऐसी कोई चीज है जो लोगों को लगता है कि विच कैन क्रिएट अ बिजनेस फॉर देम ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं इंफ्रिंजमेंट। तो let's see few of the cases. The first case is not of the infringement. ये एक purely compulsory license के grant के ऊपर है. But since you are from pharma, तो आपको ये केस पता होना चाहिए। The case is between the Bayer Corporation and Union of India. आपको पता होगा कि Bayer Corporation ही वो कंपनी है जिसने की एक ड्रग बनाई थी जो बहुत फेमस हुई थी बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, नेक्सिवर, which is सोरापेनेप टॉसाइलेट। तो सोरापेनेप टॉसाइलेट पे ऑलरेडी पेटेंट था, सिर्फ इंडिया में ही नहीं 45 कंट्रीज में भी पेटेंट था, एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी कैंसर। बट क्यों ये ड्रग बहुत फेमस हुई थी? बिकॉज इसका ये ट्रीट तो करती थी, बट द थिंग इज कि इसका कॉस्ट बहुत हाई था। And not even India, in fact, developed countries maybe it is very difficult for others to, you know, जो जिनको की किडनी कैंसर हो गया है कि वो उसको अफोर्ड कर पाए। तो एज पर आवर पेटेंट लॉ इन इंडिया, अगर कोई भी 3 कंडीशंस होती हैं कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट होने के लिए, तो जब ये ड्रग वो तीनों कंडीशंस को नहीं मेट कर पा रही थी, तब एक कंपनी थी हमारे यहाँ की, नेटको फार्मा का नाम तभी वहां से आया था। उन्होंने अप्रोच किया था पेटेंट ऑफिस को और कहा था कि वी वांट टू मेक दिस ड्रग, बट सिंस इट हैज दिस पेटेंट ओवर इट, वी कैन नॉट यूज इट, एंड देयरफॉर वी वांट कि आप हमें कंपल्सरी लाइसेंस दीजिए। तो उस टाइम में दैट वाज द फर्स्ट कंपनी जिसको कि कंपल्सरी लाइसेंस मिला था, वेयर डिस्पाइट हैविंग द पेटेंट, अगर वो ड्रग पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं यूज हो पा रही है, बिकॉज या तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर वो उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और या फिर उसको आप बना नहीं पा रहे हैं किसी और रीजन से, तो आप उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। इसमें नेटको जीता था एंड नेटको ने फिर उसको बनाया था। सो दैट इज वन ऑफ द केस। Another one is Yahoo versus Akash Arora. It is also very important, and ये important आज के सिनेरियो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट कि अभी हम लोग क्या करते हैं, लाइक इफ आई हैव गॉट द बिजनेस थॉट, मैं सबसे पहले उसकी डोमेन अवेलेबिलिटी देखूंगी कि डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है। वाई मैं देखूंगी, आज से शायद 20 इयर्स पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कोरोना के बाद तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डोमेन नेम सबसे पहले देखते हैं, बिकॉज एवरी बिजनेस मस्ट हैव वेबसाइट टुडे।
right? And this was the first case of cyber squatting, and ये बहुत पुराना केस है, ये आज का नहीं केस है. So cyber squatting में क्या होता है कि when people will, so it is the cyber squatting, as you can see on my screen, it has been defined as the registration, trafficking in, or the use of a domain name that is either identical or confusingly similar. तो जब लोग आप ही के जैसा similar डोमेन नेम यूज करते हैं, एंड देन वो लोगों को डिसीव करते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी सर्विसेज है. अभी रिसेंटली हम लोगों ने भी एक लीगल केस देखा था जिसमें हमारे क्लाइंट का कंफ्यूजिंगली सेम नेम, उन्होंने भी डोमेन नेम लिया. दैट इज आल्सो साइबर स्क्वाटिंग. सो प्लीज बिवेयर ऑफ दिस साइबर स्क्वाटिंग. ये केस यहाँ रखने का रीजन ही है कि इफ यू गाइज आल्सो डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो सबसे पहले आप डोमेन नेम ले, डोमेन नेम के बाद उसका ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट कराएं, एंड देन यू स्टार्ट योर बिजनेस फुल फ्लेजेड, right? So this is also, and in this, for the first time in India, the Delhi High Court, they held that a domain name serves the same function as trademark and is entitled to equal protection. Yes, this is also one of the case. You know that Zandu balm, I think आप सबने यूज किया होगा. जब भी आपको कोल्ड हो जाता है या ये चोक हो जाते हैं आपकी nostrils, so people apply that Zandu. And no, it's not that. So Zandu balm is the balm, right? It is the product of Imami, and you must have used this product. You know that this is a very famous case of Zandu balm versus Dabang producer. या मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जब आप कॉमर्शलाइज अपनी आईपीआर राइट्स को करते हैं तो उसके भी क्या क्या रेपरकशंस आते हैं. एंड वो रेपरकशंस एट टाइम हमें लगता है अरे किसी ने हमको इन्फ्रिंज किया, बट एक्चुअली दैट आल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग. तो यू नो कि एक सलमान खान की मूवी आई थी दबंग. दबंग में एक सॉन्ग था जंडू मुन्नी बदनाम हुई करके. And in that song, Munni Badnaam Hui, they have used the name Dabang. They have used the name Zandu Bang. You know that despite Malaika Arora was the brand ambassador of Imami Group, but that doesn't allow her to use the word Zandu Bam in her husband's movie Dabang, because the director and producer of Dabang was Arbaz Khan, who was the husband of Malaika Arora Khan. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एंड ब्यूटीफुल केस है कॉपीराइट का कि दो मलाइका अरोड़ा, शी वॉज द एम्बेसडर ऑफ इमामी दैट टाइम, लेकिन उन्होंने उस टाइम इमामी से बिना पूछे अपने सॉन्ग में जंडू यूज किया. एंड लेट मी टेल यू, वो सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई, उसमें जंडू से भी वो बहुत फेमस हुआ था. So you see that the use of catchy words and established brand in song to attract the attention of viewer is not something that is new these days. It is very common, and that's why people use others' name. तो imagine अगर आपने ऐसा कुछ create किया और मान लीजिए अगर वो कोई और use करता है, तो you always have the IPR rights over it, but you have to make sure that you are protecting it. So this is also the way you can commercialize. Like there are many people who are like very good in dialogue delivery. वो खुद ही dialogue बनाते हैं अपने, but वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं इससे भी commercial output निकाल सकता. So you can definitely can, because this kind of songs are also there in Bollywood, so you can. Another and the last one is the DM Entertainment versus Baby Gift House. After ending this, I will ask you whether IP is an investment or expense. What you think? So, trademark infringement case hai. It is related to the passing of in celebrity merchandise. So, you know that I think it was 25 years back, Daler Mehndi was the famous pop star from Punjab, and he had a large fan base. जैसे कि अभी उनके कुछ साल पहले उनके ब्रदर थे मिक्का सिंह, तो सेम वो उस टाइम के थे दलेर मेहंदी, that he was the actually the pop star from the Punjab, and he has a large fan base and is extremely popular among the Punjabi pop music lovers. So you know that he has incorporated a company called DM Entertainment in 1996, so that उनका जो IP का जो भी काम है and जो भी चीजें वो सब आर्टिस्ट से रिलेटेड वो मैनेज करेंगे. तो वहीं पर एक कंपनी थी, दैट्स नेम इज बेबी गिफ्ट हाउस. ठीक है, एंड दे यूज्ड टू मेक द गिफ्ट्स. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब दलेर मेहंदी की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी देखी तो उन्होंने दलेर मेहंदी के मिनिएचर डॉल्स बनाना शुरू कर दिया, एंड दे यूज्ड टू पुट द सॉन्ग आल्सो इन दैट डॉल्स. एंड उन्होंने ये काम बिना दलेर मेहंदी से या उनकी कंपनी से बिना किसी परमिशन के किया.
might be they are not aware about the trademark because ये बहुत ही old है. It's like around 1996 तब का ये केस है. तो you see कि कितनी old है. लेकिन उस टाइम भी दलायर मैनी ने अपनी सारी चीजें प्रोटेक्ट करवा रखी थी. तो because of that they actually filed the case against the baby gift house कि आपने कैसे मेरा चेहरा यूज किया अपनी डॉल्स के लिए. एंड यू नो कि वो बहुत अच्छा बिजनेस बना पाए इन डॉल्स को बेच के. बट व्हाई इफ यू सी द क्रक्स इज बिकॉज ऑफ दलेर मेहंदी ओनली. सो बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी दे हैव. सो later on जब ये केस फाइल हुआ they have to pay a hefty amount of penalty to Dalar Mehndi Entertainment, saying that we are sorry. And you must know कि trademark and copyright में it's a criminal case unlike the patent जहाँ पे civil case होता है तो वो वहाँ भी हो सकता है. So that is all about it. The last case is PepsiCo. इसमें ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि PepsiCo का जो ये आपका प्रोडक्ट आता है लेस, इसके अंदर जो चिप्स होते हैं वो चिप्स जस्ट पोटैटो से बने होते हैं. उस पोटैटो का नाम है FC5. And that FC5 is a protected variety. ये plant variety protection के अंडर प्रोटेक्टेड वेराइटी है, इसलिए इसको पेप्सिको के अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता. बट पेप्सिको ने जिन इंडियन फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करके और उनको अपना ये पोटैटो दिया था. नाउ यू नो इन पोटैटो इट इज वेरी इजी टू क्रिएट अ न्यू वेराइटी. आप किसी और को वो दे दीजिए वो उगा लेंगे. एंड थोड़ा सा कंडीशंस बता दीजिए बिकॉज डेफिनेटली इट्स एन एमएनसी कंपनी तो हर चीज इनका बहुत वैलिडेटेड प्रोसेस एंड एवरीथिंग है. एंड दिस इज हाउ आल्सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ टॉर्नेडो इन इंडिया कि how the people can do. So this is also one of the case. But here the important thing is कि जो आप चीज लेस खा रहे हैं आपको ये नहीं पता कि उसका पोटैटो तक प्रोटेक्टेड है. तो you see that intellectual property rights is not just restricted for the use and protection of people like you and me, but for the people like the legit papad, the women who have started the papad business, for the people like who are just growing the potatoes or maybe the carrots or maybe the grapes or many things. So even the farmers are also given the rights कि वो भी अपने उसमें प्रोटेक्शन करा सकते हैं बिकॉज वो लोग भी बहुत कुछ रिसर्च करते हैं. बट हम लोग उस चीज को उस अप्रोच से नहीं देखते, मतलब उस नजर से नहीं देखते. तो आई वुड से इट इज वेरी गुड. मैंने ये एग्जांपल इसलिए बताया कि अगर आपके भी आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हैं, आई थिंक उनको आपको अवेयर करना चाहिए. हम सबके ऊपर है कि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और ये हेल्प कर पाए कि किसी का कोई हुनर उसको अच्छा कमर्शियल आउटपुट दे सकता है तो आई थिंक वी शुड डू इट. सो दैट इज ऑल अबाउट द economic and commercialization value of intellectual property rights. I hope that I would be able to make you understand. And thank you so much for listening to me patiently. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, ma'am. It's always a pleasure listening to you. And thank you very much, ma'am, for your insightful talk on the intellectual property rights, capitalism, including the IPR strategies, its applicability, and giving us very good or very understandable, I can say, day-to-day examples. And your expertise will definitely shed light on the intricate relationship between innovation, economic systems, and legal frameworks. So thank you very much, ma'am. We appreciate your time and expertise also in sharing your knowledge with us. Thank you. Thank you for your kind words. I'm humbled. Thank you so much for inviting me. And I'll always say there is a connection with the GG's group, and I feel like a family member here. So me too, ma'am. Actually, it was an online session, so I'm not able to express myself. Actually, no, it's okay. Thank you so much. You expressed it very well. It made my day, and thank you for listening me patiently. I always say the people who are listening me, and today my throat is also in a very bad condition. So just I'm sorry in case if anything went no, wrong. ma'am, nothing happened. Nothing of that sort happened. It was a wonderful one. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, can you close this PPT? Yes, I am. I have to take a picture. Okay, thank you. Should I leave now? 1 minute. Thank you very much. Thank you so much. Okay, bye. Take care. Okay. Bye.
Now I will introduce you to the next speaker of the day, that is Dr. Rahul Taneja. He is working as scientist, Directorate of Science and Technology, Government of Haryana, Panchkula. As a scientist at the Council of Science and Technology, he facilitates the micro, small, and medium enterprises of Haryana and Chandigarh for IPR-related issues. His portfolio further categorically includes dealing with patents, including PCT applications, drafting, filling, and other prosecution, including consultancy, trademarks, including convention application, and IPR enforcement rules at the custom for scissor of confident goods, including consultancy, designs, and copyrights. Dr. Taneja is also selected as Bentham Brand Ambassador of 2018-19 by Bentham Science Publication. He has also been awarded as significant contribution in healthcare by All India Institute of Medical Science, AIIMS, New Delhi, and he has already delivered more than 320 specialized lectures in various national and international conference and training programs on intellectual property rights in various institute and industrial associations. So I request sir to please take over and please share his PPT if there's any. Thank you so much, ma'am, Yes, for sir. the introduction. Thank you, sir. And thank you, Dr. Kumar Gaurav, Dr. Geeta Deswar, other faculty member for inviting me to deliver the lecture on intellectual Sir, property. your camera, we can't see. Yes, now. So, Thank you for inviting me. And it is always a pleasure to deliver a lecture on intellectual property right at my own college, because I'm the student of Guru Gobind Singh College of Pharmacy, and I'm the student of second batch. yes. डॉक्टर प्रियंका, जो मैडम ने ट्रेडमार्क पे फोकस किया ज्यादा कि पेटेंट पे, सो मैं उस चीज को स्किप कर दूंगा। मैं उनका लेक्चर Patents पे, trademarks पे भी she took a bit of all actually. ओके। इंटेलेक्चुअल मीन्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड्स। प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी होती है, राइट्स उसके ऊपर अधिकार मिलते हैं। टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, टेंजिबल प्रॉपर्टीज एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज। टेंजिबल प्रॉपर्टीज आपके पास अपनी गाड़ी है, बंगला है, मकान है, यू हैव सम स्पेसिफिक राइट्स। आप अपनी मर्जी से उसे बेच भी सकते हैं, आप उसे किराए पे भी सकते हैं, इवन यू कैन डिस्ट्रॉय देम। सिमिलरली वी हैव इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स हमारी सोच है, हमारी क्रिएटिविटी, वो कुछ भी हो सकती है। समर साइंटिस्ट, पेंटर, डिजाइनर, म्यूजिशियन, टेक्नोक्रेट्स, कोई पोइम लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डिफरेंट टाइप की पेंटिंग कर रहा है। वी कैन प्रोटेक्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड वी आर लिविंग इन 2024, तो हमें अपने वैसे भी सभी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। मेरा ये जनरली मानना है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बहुत कम ही नॉलेज है, बिकॉज एज ए स्टूडेंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एज ए स्टूडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कितनी स्कीम्स देती हैं फॉर टू मेक योर करियर इन फ्यूचर इन फॉर द हायर स्टडीज। बिकॉज मैंने ये देखा है कि हमारी कंट्री में लोगों को ना ही गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता है, ना ही अपने राइट्स के बारे में पता है कि हम उसको फर्दर कैसे अवेल कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग क्या होता है कि बेसिकली एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही दायरे के अंदर सोचते हैं कि उसके अलावा कुछ चीजें नहीं है। बट जितने ये प्रोग्राम्स होते हैं उससे आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि वर्ल्ड वाइड और नेशनल वाइज हमारी कंट्री में किस किस चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो हमारी कंट्री में लास्ट 1 or 2 ईयर में आईपीआर में कितना बड़ा बदलाव आया, वी ऑल आर डिस्कस about in all these aspects. There are two type of properties, industrial properties and copyright. Copyright को industrial properties में इसलिए रखा गया, बेसिकली ये anybody can create a copy। जरूरी नहीं है कि copyright एक industrial purposes के लिए यूज हो। ये आप एक अपनी जो आपका जो एक शौक होता है, आपकी जो हॉबीज होती हैं, उसको भी एज ए कॉपीराइट प्रोटेक्ट कर सकते हो। मींस जरूरी नहीं है कि आपको उससे अर्निंग ही करनी है। सो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्री पर्पसेस के लिए यूज होती है, लाइक पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, लेआउट डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज। सो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज कहा गया है। कॉपीराइट बेसिकली आप जैसे कोई पेंटिंग हो गई, कोई डिजाइन हो गया, कोई म्यूजिक हो गया, आपने कोई गाना गाया,
ठीक है, आपने उसको गाने को अगर आपने कमर्शलाइज नहीं करना तो आपको कहीं उसको अपनी म्यूजिक नहीं लॉन्च करना, लेकिन स्टिल एज ए हॉबी आपने उसको लिखा, उसको गाया, स्टिल यू वांट टू प्रोटेक्ट इट, देन यू कैन प्रोटेक्ट बाय द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। सो इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। जस्ट ए मिनट। So we will talk about the patent. What is patent? Patent is an exclusive rights granted for invention and innovation. It may be a product or it may be a process. As such, innovation cannot be protected by the patents because Indian Patent Act में कहीं पर भी innovation word को use नहीं किया गया. They people are only talking about the invention. Invention means your invention having a some technical advancement or some having a some inventive steps. You will get a monopoly rights for the patent rights that nobody can use your invention without your permission. Nobody can sell your invention without your permission. फॉर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग। मीन्स ये राइट्स आपको 20 साल के लिए मिलेंगे। 20 साल खत्म होने के बाद इसको कोई भी रिन्यू नहीं कर सकता, कोई भी यूज नहीं कर सकता, कोई भी अपने पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट द पेटेंट राइट्स बिकॉज एज ए स्टूडेंट, एज ए बी फार्मेसी स्टूडेंट एंड एम फार्मेसी स्टूडेंट, आपको पेटेंट राइट्स के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ए मास्टर फार्मेसी तो आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, कैसे राइट करना है, या बी फार्मेसी में भी आपका अपने काफी, अब जैसे मैंने देखा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी में काफी सारे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं और काफी सारे डिजाइन एप्लीकेशन भी फाइल होते हैं। बट माय रिक्वेस्ट इज दैट कि आपको स्टैंडर्ड पेटेंट्स भी फाइल करने चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली आपने जो रिसर्च की ड्यूरिंग मास्टर ऑफ फार्मेसी या आप कोई अपना पीएचडी में जो रिसर्च करते हैं उसको भी अगर आप उसको टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करेंगे देन यू विल गेट ए मोर रिवार्ड एज कम्पेयर टू द डिजाइन एप्लीकेशन। How to check a patentability? There are three criteria of patentability: novelty, non-obvious, and industrial applicability. Novelty means वो चीज कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी नहीं जानी चाहिए before the filing of the patent application. Means अगर if it is already published in the public domain, वो किसी public domain में है या कहीं पर भी already published है तो आपको patent grant नहीं होगा। इन्वेंटिव स्टेप मीन्स आपकी इन्वेंशन के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए, मीन्स कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट होनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं होगी तब भी आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। इट मे बी न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेंशन, यू कैन प्रोटेक्ट बाय द इन्वेंटिव स्टेप्स। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मीन्स वो किसी ना किसी अच्छे पर्पसेस के लिए और ह्यूमन काइंड के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर वो अच्छे पर्पसेस के लिए और ह्यूमन काइंड के लिए इस्तेमाल नहीं होगी तब भी आप अपनी इन्वेंशन को पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेंशन तो होती हैं लेकिन वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं होती तो आप उसको पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बम बनाया, कोई एटॉमिक एनर्जी चीज बनाई जिससे हमारी सोसाइटी को लिए हार्मफुल हो, आपने कोई ऐसा वायरस बना दिया जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, आपने कोई ऐसी मशीन बना दी जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, लाइक जैसे गन्स हो गई, स्टेन गन्स हो गई, इनको भी हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। पेटेंट्स आर टेरिटोरियल राइट्स। अगर आपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया तो आपके राइट सिर्फ इंडिया तक ही रहेंगे। बट इफ यू वांट टू क्लेम योर राइट्स फॉर दी अदर कंट्रीज देन यू हैव टू फाइल ए पीसीटी। पीसीटी क्या होता है? एक पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है जिसके द्वारा मल्टीपल कंट्रीज में अपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट इन विच कंट्री यू वांट टू फाइल योर पेटेंट एप्लीकेशन। मींस सपोज करें अगर आपको यूएसए में फाइल करनी है, चाइना में फाइल करनी है, तो आपको उस कंट्री के कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने पड़ेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपोजिशन: प्री ग्रांट ऑपोजिशन एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। जो पेटेंट ग्रांट होने से पहले मिलता है आप अपोज करते हैं उसे प्री ग्रांट कहते हैं। पेटेंट ग्रांट होने के बाद करते हैं उसे हम पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कहते हैं। और टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी इन्वेंशन को सिर्फ इंडिया में ही फाइल किया और आप चाहते हैं कि आपकी तो आपके जो राइट्स हैं वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कि हमने इंडिया में फाइल कर दिया और हमें अदर कंट्रीज में भी राइट्स मिलने चाहिए। उसकी एक ड्यूरेशन होती है बट दैट राइट्स ओनली बिलोंग्स टू द इंडिया। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी इन्वेंशन किस किस कंट्री में कमर्शलाइज करनी है। फॉरेन कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन। मल्टीनेशनल कंपनीज भी इस पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल कर सकती हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री में 2022 में जो अप्रोक्सीमेट 60 to 70,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होते थे, उसमें से 60-70% जो पेटेंट थे वो
मल्टीनेशनल कंपनीज फाइल करती थी, रेस्ट ऑफ द जो पेटेंट है वो इंडियन एप्लीकेंट फाइल करते थे। बट नाउ इन 2023 अप्रोक्सीमेट 1 लाख पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुए हैं। 1 लाख में जो 60,000 पेटेंट है वो इंडियन एप्लीकेंट ने फाइल किया है। मींस हमारी जो पेटेंट फाइलिंग की रेशो है वो इंक्रीज हो रही है इन इंडिया। देर आर 4 ऑफिसर कंट्री, नॉर्दर्न, साउथर्न, वेस्टर्न एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको नॉर्दर्न से पेटेंट फाइल करना है देन यू कैन अप्रोच पेटेंट ऑफिस दिल्ली, साउथर्न से चेन्नई, वेस्टर्न से मुंबई एंड रेस्ट ऑफ इंडिया कोलकाता। How to submit a patent application? You can submit by the online mode, by post, or you can submit by hand also. सो सेक्शन इसमें क्या होता है कि पेटेंट एक्ट में एक सेक्शंस होते हैं, जैसे किसी एक्ट में सेक्शन होते हैं वैसे ही पेटेंट एक्ट में सेक्शंस होते हैं कि आप किस किस चीज के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, वो पेटेंट ऑफिस आपको बताता है। लाइक सेक्शन 3 क्या कहता है कि सेक्शन 3 है ए फ्रीलेस इन्वेंशन कंटेड टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज। लाइक जो मशीन 100% से ज्यादा परफॉर्मेंस देती है उनका पेटेंट ग्रांट नहीं होता। जो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट होती है उनका पेटेंट ग्रांट नहीं होता। डिवाइस फॉर हाउस ब्रेकिंग के लिए पेटेंट ग्रांट नहीं होता। गैमलिंग मशीन के लिए पेटेंट ग्रांट नहीं होता। मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, किसी भी थ्योरी का, किसी भी लिविंग थिंग का पेटेंट ग्रांट नहीं होता। मतलब किसी भी लिविंग सब्सटेंस का, किसी भी आप कहें प्लांट का, एनिमल्स का हमें पेटेंट मिल जाए तो नहीं मिलेगा। किसी भी न्यूटन्स लॉ का पेटेंट ग्रांट नहीं होता। नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिम्स का पेटेंट ग्रांट नहीं होता। लेकिन अगर आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड है देन यू विल गेट ए पेटेंट राइट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है कि आपने उसके अंदर कुछ रिसर्च की देन यू विल गेट ए पेटेंट राइट्स, बट नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिम्स के लिए आपको पेटेंट राइट्स नहीं मिलेंगे। Section 3D is the mere discovery of a new form of a known substance which does not result in enhancement of the known efficacy of that substance। मतलब आपके किसी किसी सब्सटेंस के अंदर आपने कुछ अगर एफिकेसी चेंज नहीं होती, उसकी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट चेंज नहीं होती, तब भी आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग सब्सटेंस पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड। सेक्शन 3 इज द मियर्ड मिक्सचर। आपने दो कंपाउंड्स को जोड़ के एक नया कंपाउंड बनाया, उसके बेसिस पे भी पेटेंट ग्रांट नहीं होंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ आपने उसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट कर दी। आपके पास एक कंपाउंड है ए, उसमें आपने पैरासीटामोल यूज की, कंपाउंड बी है जिसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है, आपने ए बी को कंबाइन कर दिया। नाउ यू आर सेइंग दे आर शोइंग एज ए एंटीपायरेटिक एक्टिविटी एज वेल एज एनाल्जेसिक एक्टिविटी, देन यू डोंट विल गेट ए पेटेंट राइट्स फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स। सो सेक्शन 3 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं आपको केयरफुली अपनी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना है और ये पैरामीटर चेक करने हैं कि वो सेक्शन 3 के अंदर फॉल नहीं करने चाहिए। मियर अरेंजमेंट, ए बकेट फिटेड विद टॉर्च को पेटेंट के लिए ग्रांट नहीं कर सकते। एन अम्ब्रेला विद फैन। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, खेती करने के तरीके को भी हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। बट अगर जिससे आप इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं मेरी स्लाइड्स में, इन इंस्ट्रूमेंट को आप पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। जैसे यमुनानगर में भी काफी बनते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, या पंजाब में बनते हैं, हरियाणा में काफी जगह बनते हैं। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इसका डिजाइन भी फाइल करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने कुछ नया टाइप की इसमें टेक्निक्स लगाई मशीन में तो इसको हम पे, पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। So method of agriculture or horticulture cannot be filed for the patent application. So and section 3I is the any process for medical, surgical, curative, diagnostic, therapeutic। मीन्स आपने कोई सर्जिकल प्रोसेसेस की बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर भी पेटेंट राइट्स नहीं मिलेंगे। मेडिसिनल प्रोसेस के लिए नहीं मिलेंगे, क्यूरेटिव के लिए नहीं मिलेंगे, रिमूवल ऑफ कैंसर ट्यूमर के लिए भी आपको पेटेंट राइट्स नहीं मिलेंगे। सेक्शन 3G, प्लांट एंड एनिमल होल एज सच पेटेंट कैन नॉट बी फाइल्ड।
किसी भी प्लांट्स के लिए, किसी भी एनिमल्स के लिए पेटेंट राइट्स नहीं मिलते हैं। सेक्शन 3L, ए लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। आपने कोई पोएम लिखी, आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई गाना गाया, उसको भी आप पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ए आइडिया इन दी एक्सप्रेशन फॉर्म, उसको भी हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 3M, स्कीम फॉर लर्निंग इन लैंग्वेज, मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्रॉसवर्ड पजल, इनको भी हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ए मेंटल एक्ट। मेंटल एक्ट एज सच कैन नॉट बी फाइल फॉर द पेटेंट एक्ट। Section 3S, any process like any manners or method of expressing a word, spoken words, visual displays, symbol diagrams, इनको हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं, बट पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। The reason is this, because this is not a technology, because this is not an invention. Section 4, invention falling under the Atomic Energy Act are also not patentable. Like invention related to the compounds uranium, branium, thorium, platinum, इनको भी हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, because it is banned by the government of India under the section 421 of the Atomic Energy Act. So this is the application filed by the state wise, हर कंट्री में कितने कितने पेटेंट फाइल होते हैं, उनका डाटा है ये। इसके अलावा आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे। आपको पेटेंट सर्च करना है तो आप पेटेंट में जाएंगे, ट्रेडमार्क चेक करना है तो ट्रेडमार्क के पोर्टल पे जाएंगे। द साइट इज ip.india.gov.in, डिजाइन मींस एवरीथिंग इज गिवन देयर, एवरी डिटेल्स इज गिवन देयर। सॉफ्टवेयर को हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं, यस और नो। सॉफ्टवेयर को इंडिया में हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर से कोई हार्डवेयर रन होता है, देन यू कैन फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन। अब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर से रन करते हैं? लाइक जैसे मान लीजिए आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, आपका लैपटॉप है, या आपकी जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन आती हैं, ग्लूकोज मेजर करने की मशीन आती है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन दी सॉफ्टवेयर। कि आपने कोई सैंपल रखा, उसमें ऑटोमेटिकली उसके अंदर रीडिंग्स आ जाती है, बिकॉज वो हार्डवेयर अपनी आपकी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपको रिजल्ट शो करता है। Our business method is patentable in India? Yes or no? No. The method of doing a business is not regarded as an invention. किसी बिजनेस को करना कोई आविष्कार नहीं है। मीन्स आविष्कार इन द सेंस आपका वो प्रोडक्ट आविष्कार हो सकता है, लेकिन वो मेथड टू सेल योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, इट इज नॉट एन इन्वेंशन। देयर आर टोटल 30 फॉर्म्स होते हैं जो पेटेंट के लिए फाइल किए जाते हैं। इनिशियली आपको फॉर्म सबमिट करने होते हैं, फॉर्म 1, 2, 4 एंड 5। 1 क्या होता है? एक सिंगल पेज का एप्लीकेशन होता है, उसमें आपको अपने पेटेंट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फॉर्म 2 में जो आपकी पूरी रिसर्च होती है आपकी इन्वेंशन की, वो डिटेल में सबमिट करनी होती है। फॉर्म 3 क्या होता है? स्टेटमेंट अंडरटेकिंग। आप अपनी एप्लीकेशन को किसी और कंट्री में फाइल कर रहे हैं, तो आपको भारत सरकार को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा किसी भी कंट्री में पेटेंट फाइल कर दो। तो सपोज कीजिए आपने पेटेंट फाइल किया, तो उस टाइम आपने फॉरेन कंट्री में पेटेंट फाइल कर रखा है, नहीं कर रखा है, ये आपको बताना पड़ेगा। डिक्लेरेशन एज इन्वेंटरशिप, फॉर्म 5 आप सबमिट कर सकते हैं कि अब मैं इसका इन्वेंटर है और हमने एप्लीकेंट को ऑथराइज कर रखा है पेटेंट फाइल करने के लिए। इसके अंदर आपको 1600 रुपीज गवर्नमेंट फीस सबमिट करनी पड़ती है। आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन सबमिट करें या कंप्लीट पेटेंट फाइल करें, आपको 1600 गवर्नमेंट फीस ही पे करनी है। इसके अलावा आप 2500 रुपीज अर्ली पब्लिकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं और 4000 फॉर द एग्जामिनेशन। दिस इज द स्टेजेस ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। सबसे पहले आपका पेटेंट फाइल किया जाएगा प्रोविजनल से और कंप्लीट से, देन 18 मंथ्स के बाद वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। लेकिन आप 18 मंथ्स का वेट नहीं कर सकते, तो आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन देके वो इमीडिएटली भी पब्लिश हो जाएगा। देन विद इन 48 मंथ्स रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आप सबमिट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क आई थिंक मैडम ने आपको काफी डिटेल में बताया, तो सो मुझे लगता है इसको स्किप कर देना चाहिए। ट्रेडमार्क के बारे में हमें, क्योंकि उन्होंने काफी इलेबोरेटिव और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, और एक एक स्टेप्स को डिटेल्स में, डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट फील्ड को उन्होंने डिस्कस किया। इंडस्ट्रियल डिजाइन आर ग्रांटेड फॉर ऑर्नामेंटल फीचर, एस्थेटिक फीचर, शेप, कॉन्फ़िगरेशन। कोई चीज बाहर से कैसे दिखाई दे रही है, उसकी आउटर अपीयरेंस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो शेप हो, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे ऑर्नामेंटल फीचर हो, उसी को हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। बट एक बात ध्यान रखें, इसमें हम टेक्निकल फीचर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। टेक्निकल फीचर क्या होता है? स्पीच करिए, आपको ये दिख रहा है ये डिवाइस, इस डिवाइस को कहते हैं, हम सपोज करें व्हीकल कह दिया आपने इसको, या साइकिल कह दिया, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये किस तरीके से मूव करती है, इसको हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो होंडा, उसको हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं। लेकिन ये जो इसकी शेप है, हाउ इट लुक लाइक्स, इसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी के लिए हमें इसको पेटेंट के लिए फाइल करना पड़ेगा। लाइक द एग्जांपल ऑफ द चेयर,
जैसे ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये मूवमेंट्स के लिए है चेयर की, ये दिस इज ए फंक्शन, और टेक्निकल फंक्शन के लिए हमें इसको पेटेंट के लिए फाइल करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड एज इंडस्ट्रियल डिजाइन। लाइक जितने भी एग्जांपल्स हैं, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजाइन। पैकेजिंग कंटेनर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी, पीपी ज्वेलर, फर्नीचर, ये सब अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल डिजाइन। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन स्टेशन। ये हाथ और पैर का निशान है, सबको पता है ये हाथ और पैर का निशान है, लेकिन मार्केट में इस तरीके की चेयर नहीं देखी गई। वी कैन प्रोटेक्ट बाय द इंडस्ट्रियल डिजाइन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिजाइन फ्यूचर। सेम आर्टिकल बट डिफरेंट शेप्स। दिस इज एग्जांपल, जब आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ऐसे आपको एक डिजाइन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। दिस इज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये 15 साल के लिए आपको राइट्स मिलते हैं। 15 साल खत्म होने के बाद इस डिजाइन को कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। आप उसे रोक सकते हैं कि 15 साल तक तो रोक सकते हैं, 15 साल के बाद आप उसे रोक नहीं सकते कि आपने ये डिजाइन क्यों यूज किया, क्योंकि 15 ईयर्स ही इसकी ड्यूरेशन इनफ होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए फाइल नहीं कर सकते, लाइक कैलेंडर्स, मैप, ऑफिशियल सिंबल्स, लेबल, टोकन, रिलीजियस सिंबल्स, इनको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए फाइल नहीं कर सकते। अब एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल टाइप की भी आईपी प्रोटेक्शन हो सकती है, जैसे पिछले मैम ने भी आपको एक एग्जांपल्स बताए। दिस इज एग्जांपल ऑफ द डाइसन एयर ब्लेड। इसमें आपने अपने हैंड इंसर्ट करने हैं, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली सैनिटाइज एंड ड्राइड। तो सो दिस टेक्नोलॉजी इज प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट राइट्स। ब्रांड नेम डाइसन एयर ब्लेड, जो इसका ब्रांड नेम है, उसको हम ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द शेप ऑफ द डिस डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिजाइन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज आपने जो हैंड ड्राइड के लिए देखा होगा, मोस्टली आपने मॉल्स के अंदर या होटल्स के अंदर आपने देखा होगा, वहां पे आपको हैंड नीचे करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एयर का ब्लोअर चलता है और आपके हाथ को ड्राई करता है। सिमिलरली लाइक दिस, इन दिस में आपने हैंड इंसर्ट करने हैं, तो एक जो स्प्रे है वो सैनिटाइजर का स्प्रे आएगा एंड उसके बाद वो आपको ड्राई भी करेगा। जब आप उसको रिमूव करेंगे तो अंदर एक हीटिंग सिस्टम होता है जो आपके हैंड को इमीडिएटली ड्राई करता है। एंड द आउटर शेप ऑफ द डिवाइस इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल डिजाइन। कॉपीराइट, कॉपीराइट एक एक कॉपीराइट मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक स्टूडेंट को +2 लेवल पे ही पता होना चाहिए कि हम किस किस चीजों का कॉपीराइट। बिकॉज मेरा ये मानना है कि 11वीं और 12वीं में जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं ना, वो इन चीजों को ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, अपनी कोई नई तरीके की ड्रेसिंग बनाते हैं, या कोई जो अपना नई तरीके का कोई मॉडल बनाते हैं, उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। कॉपीराइट आर ग्रांटेड फॉर म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क। आपने कोई पोएम लिखी, कोई कविता लिखी, कोई गाना गाया, कोई म्यूजिक कंपोजिशन बनाई, यू कैन प्रोटेक्ट बाय दी कॉपीराइट प्रोटेक्शन। आपको मैंने जितने भी राइट्स बताए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, दैट ऑल आर दी टेरिटोरियल राइट्स। मींस उसकी जो राइट्स हैं वो इंडिया तक रहते हैं, लेकिन कॉपीराइट्स को आप वर्ल्ड वाइड आपका प्रोटेक्ट किया जाता है। As such, there is no official procedure of the copyright, but the moment you have created your work, it is protected by the copyright. But आप copyright office में भी फीस सबमिट करके copyright सर्टिफिकेट ले सकते हैं। There are two type of rights, moral rights and economic rights. नैतिक अधिकार एंड फाइनेंशियल बेनिफिट। मीन्स कई बार क्या होता है, जैसे आप ने देखा होगा, जो म्यूजिक कंपनी वाले होते हैं, प्रोड्यूसर अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, हीरो अलग होते हैं, उसके ऊपर फिल्म पे पैसा कोई और लगाता है, फिर उसके देर आजकल तो VFX चलता है, उसको अलग बंदा बस डेवलप करता है। तो उस सब किस किस का अधिकार होगा उसके अंदर, वो सब आते हैं मोरल राइट्स के अंदर। लेकिन जो राइट्स लेते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं, वो जाते हैं वो इकोनॉमिक राइट्स के लिए। मीन्स जो फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं वो इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर जाएंगे। राइट ऑफ ऑथरशिप क्या होता है कि अगर आपने कोई किसी क्रिएटिविटी में पार्ट किया तो उसमें आपका नाम देना मैंडेटरी एज एन मोरल राइट्स। क्रिमिनल रेमेडीज मीन्स आप उसके ऊपर आपको फाइन पड़ सकता है 50,000 से 2 लाख रुपए अगर आपने किसी का डिजाइन कॉपी किया। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने से 3 साल के लिए अगर आपने किसी का डिजाइन कॉपी किया। So this is all about the copyright. Copyright also plays a very important role. Geographical indications are granted for natural goods, agriculture goods, manufactured goods. कोई जो चीज है जो किसी नेचुरल जगह के लिए फेमस है, लाइक बासमती राइस, मैसूर सिल्क, मैसूर सैंडलवुड, इन सबको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक किसी एक व्यक्ति को राइट्स नहीं मिलते, ये ग्रुप ऑफ क्लस्टर को मिलते हैं। मान लीजिए यमुनानगर में जैसे कुछ ऐसा पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर यमुनानगर में एक तो प्लाई बोर्ड वाले बहुत ज्यादा हैं, और एक जो आपके यहाँ पर जो
किचन्स के या ये बर्तन वगैरह बनते हैं। लेकिन अगर उसमें कई लोग प्रूव कर देते हैं कि हम ये इस टाइप के पर्टिकुलरली उस टाइप की टेक्नोलॉजी से ही हम बर्तन बनाते हैं, तो उनको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे बासमती केक राइस, मैसूर सिल्क है, सैंडलवुड है, सोप है, पेड़ा है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती। द लोकेशन, द ज्योग्राफी, बिकॉज इसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर्टिकुलर रीजन की जो चीज फेमस है, जो सिर्फ उसी जगह पर पाई जाती है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। और इस ये ट्रेडमार्क से किस तरीके से अलग होती है? ट्रेडमार्क जो ग्रांट किया जाता है, ट्रेडमार्क जो ग्रांट किया जाता है वो ब्रांड नेम के लिए होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ग्रांट किया जाता है वो ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स को ग्रांट किया जाता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो डिप्लोमा कराती है DL 101, 102, 103। ये लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि जब मैं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी में था 2006 में, मैंने ये डिप्लोमा किया था DL 101, और इन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट भेजा था स्विट्जरलैंड से। तब हार्ड कॉपी आती थी, अब इनकी सॉफ्ट कॉपी आती है। लेकिन वो सर्टिफिकेट से ही मैंने सोचा था कि हमें अपने IPR के बारे में सोचना चाहिए। मीन्स आपके पास इसके अलावा भी काफ़ी डिप्लोमा कराते हैं, 101, 2, 3, 4, और काफ़ी सारे, डेट ऑल आर दी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा पेड भी हैं, जो अगर आप एडवांस भी कर जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बट इनिशियली एट द लेवल ऑफ बी फार्मेसी आपको फ्री वाले डिप्लोमा करने से यू विल गेट ए गुड नॉलेज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में भारत सरकार हर साल 140 वुमेन्स को ट्रेन करती है इन द फील्ड ऑफ पेटेंट, कि आपको पेटेंट को लिखना कैसे है, ड्राफ्ट कैसे करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है जो बच्चे इसको करते हैं। दिस स्कीम इज ओनली फॉर द वुमेन्स। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क मी। Any question? So video is off. आपकी वीडियो ऑफ हो गई। One second, sir. Actually, I want to take a video. Thank you very much, sir. It's always nice to hear you always. And thank you very much for your talk. It was not only informative, but engaging also, captivating the audience with your deep knowledge and passion. And you very well explained about the patents, its sections, industrial designs, and geographical indications. And we are very grateful for the opportunity to learn from such an accomplished expert like you. So it's always been grateful to listen to you. अच्छा Thank you. प्रियंका, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अभी इसमें हमारे कॉलेज के बच्चे हैं कि और भी अदर कॉलेज से भी सर है? एक्चुअली हमने YouTube पे ओपन कर दिया, तो दूसरे कॉलेजेस के पास भी लिंक भेज दिया और अपने बच्चों के पास, तो ठीक है, तो YouTube पे है जब सारा। अपने गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के बच्चों की किसी दिन क्लास होगी ना, तो आप ऑनलाइन ले लेना, क्योंकि अभी लाइंस ओपन है डिप्लोमा के लिए। तो मैं उनको वहां पर बता दूंगा कि कैसे आपने उसमें एनरोल करना है अपने आप को अप्लाई कैसे करना है, ठीक वाइको अकेडमी में। तो जब आपका पूरा एक बच्चे बैठे होंगे तो आप वो सामने अपने मोबाइल पे भी कर है। सकते एक्चुअली YouTube पे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, दे आर लिसनिंग टू यू। हैं। ओके, तो आपने, मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में। आपने www.wipo.int की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर वाइपो अकेडमी होगी। तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लाइन्स ओपन है, क्योंकि ये साल में कुछ टाइम के लिए ही ओपन होती हैं। आपने वहां पर जाना, और पीछे अगर आपने देखा होगा वुमेन डे थी, वुमेन डे पे तो इन्होंने जो पेड कोर्सेज थे वो सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में वुमेन्स के लिए फ्री कर रखे थे। पेड कोर्सेज भी, जिसकी फीस 5000 7000 थी, वो भी इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे थे। वो भी आप चेक कर लेना, शायद फ्री होंगे। तो आप जो फ्री वाले डिप्लोमा है उसमें आप जाकर DL 101, 102, 103 और 104, ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि एक पेटेंट के लिए, एक ट्रेडमार्क के लिए, और एक बेसिकली ओवरऑल के लिए। वाइपो अकेडमी पे जाके जैसे आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वैसे आपने अकाउंट बनाना है। आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। यूजर आईडी पासवर्ड के बाद आपने उसमें अपने कोर्स के लिए अप्लाई करना है। फिर वो आपको स्टडी मटेरियल भेजेंगे आपकी ईमेल आईडी पे, जो आप वहां पर अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करवाएंगे। उसके अंदर आपको सारे एक PDF आएंगी, बुक्स आएंगी। फिर जब आपका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो वो आपको एग्जाम की डेट भी बताएंगे। एग्जाम की डेट ऐसा नहीं होता कि आपको पर्टिकुलरली ये बताएंगे भी इतने बजे से इतने बजे हैं, वो आपको दिन देंगे। मीन्स आपको सपोज कीजिए 3 डेज दीजिए, 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल, तो आपको 3 दिन में कभी भी अपना कंप्यूटर को लॉगिन करना है और वहां पर जाके आपको वो एग्जाम देना है। और वो एग्जाम आपको 40 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए वो आपको देना है। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके उनके आंसर को, जो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, आई थिंक 60% है,
उससे ज्यादा नंबर ले लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो आपको, अगर आपका एक अटेम्प्ट गलत भी हो जाता है, जैसे वो ट्रू और फॉल्स पूछेंगे, तो नेक्स्ट मौका भी आपको देंगे, मीन्स आप 2 बार ट्राई कर सकते हैं उसके लिए। तो जस्ट आप कहेंगे भी ये कैसा एग्जाम हुआ, ये जस्ट फॉर द लर्निंग, फॉर द एनकरेजिंग ऑफ द पीपल अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि वो कुछ सीखे, और इसके लिए वो मोटिवेशन के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने इस तरीके के कैंपेन्स ला रखे हैं। तो आप वहां पर जाके अपना कोर्स करें, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपकी बी फार्मेसी कंप्लीट होगी, तो आप उसमें ये अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं। फिर आप जब लिखेगा बी फार्मेसी के साथ अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनको एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके पास आईपीआर में भी आपने डिप्लोमा कर रखी है और आपको इसकी बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर काफी फोकस करते हैं। अभी आप सुना होगा कि पीछे भी काफी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अब 26 जनवरी को भी कहा कि हमारी कंट्री ने 1 लाख पेटेंट ग्रांट किए। इवन कि अब ग्रांट की प्रोसेस भी काफी फास्ट हो गई है। आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर आपका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। तो काफी फास्ट प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir, for sharing the information. And I think it will definitely help the students who go for that. Thank you very much. थैंक यू।